बाद में देखेंगे. Okay जी, let's quickly move on to our topic. Today we are going to discuss one of the very important topics in epigenetics, and of course in any type of biological phenomena when where two sexes are involved in organisms. This is called dosage compensation and X inactivation. We will say X inactivation as a part of dosage compensation. So X inactivation is not something different, and these phenomena are always there wherever there are two types of organisms within a species. So where there are lots of advantages with sexual dimorphism. I mean, we know what is sexual dimorphism. Although we know the simplest form of organisms do not have two sexes, they are just simply one sex. These are homogametic, and these homogametes are doing everything. So these are spores, always diploid, always doing similar thing. Even in plants, we are not talking about this simple eukaryotes. Even in plants and multicellular organisms like humans, even we do have this type of uh, activity growth pattern, which is homogametic. These are mitotic growth patterns. For example, if you talk about plants, there are runners, there are shoots, there are branches which are mitotically growing from one cell to the other cell. On the other hand, uh, after at some stage, these organisms has to opt for another alternate mode of reproduction, which is called the sexual reproduction, or you can say that this is a meiotic form of reproduction. So these organisms produce spores or cells which are not diploid, but rather they are haploid cells, and they unite together and they give rise to the organisms. There are different advantages and disadvantages of both of them. We are not going to discuss them, but for sure the sexual reproduction has advantages because it is evolutionary more sustainable system, evolutionary more conserved system. Moreover, it always better to produce variability within the population. So through normal monogametic system, homogametic system, this variability is not possible for you. That means there is always one cell, and there is always one, you can say, there is only one type of genetic material, and this genetic material is propagating. So if something bad happen simultaneously, for example temperature shoots out simultaneously 5 degrees centigrade or 10 degrees centigrade, so it could be possible this one cell mean the the population of this one cell, which are 100% same genetic makeup, they all go simultaneously. So because there is no variation, so there is no possibility that any one of them could survive. But if there are multiple cells of in this population and each have slight difference from the other population, there is always a chance कि वो बच जाएगा. So evolutionary there are perspectives which favor both of them. We are not going to discuss them at all. So sexual reproduction is normally, we know sexual reproduction more often in eukaryote organism. Plants do have this side of reproduction. One thing which is very important to realize is that this reproduction pattern is for the genetic variability and it is for the natural selection. So these are two different things जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. In mammals, to which the humans also belongs to, the group of primates, the group of vertebrates. The sexual dimorphism is because of two genes, because of two different chromosomes, and one of these chromosomes has loosened its ability to express some expression pattern. That means it is a degenerate chromosome. It's a small chromosome. In mammals, the males are that organism which contain that degenerate chromosome, where this chromosome is called Y chromosome. This Y chromosome is a subset of maybe X chromosome, because the X chromosome is a large chromosome which contains multiple genes, but the Y chromosome has loosened its ability to contain these all genes. So as a result, uh, male and females are two different sexes, and because of the presence of either they have Y chromosome or they do not carry Y chromosome. This is the characteristic uh, in both of them. जिसकी वजह से ये
male or female. It's not always like this. There are other organisms which contain the other way around. For example, it's not always that the degenerate chromosome or Y chromosome is present in male. Some birds and uh, some insects contain uh, uh, two X chromosome in the males and Y chromosome in the females. It could be vice versa. It's not like this. How it might have origin, it's a quick slide which I would like you people to share and to give you a basic insight of this whole thing कि ये कैसे start हुआ होगा evolutionary. It's in fact not something. In the beginning, it's a kind of homogametic organism. So you need to understand the term homogamete. That means homogamete from homozygous. That means an organism with two same alleles. This is called homozygous. So from homozygous, you could say this is the homogametic organism. So that is the unisex. It's one sex only जिसके ऊपर दोनों के दोनों initial मौजूद थे. And from that, we came to understand that this is heterozygous because it's no more getting same allele, rather they are getting two different alleles. That is why it is called heterogametic. So in the beginning, this was at the homogamete. I mean, you could see it here. I mean, it has been uh, marked as female. It's just because we know that organism in today's term, these are female which are homogametic. I mean, I hope you all understand what does that mean, because they contain the two same chromosomes. This is called XX2. In other words, this is the homogametes. So that is why it has been marked as female. So in the beginning, these were all females. In other words, मैं इसको किसी और एंगल में नहीं लेके जाना चाह रहा. तो this is in the beginning. This is this. So that means these two chromosomes. Now we know today these two chromosomes are X chromosome. हम इसको फर्ज कर लेते हैं आज के ज़माने में ये chromosome X chromosome है. But in the beginning, there were some chromosomes which were the same genetic material. Both of them were carrying genetic material, but due to some evolutionary unknown pressure, I mean, we do not know what type of evolutionary pressure was that, but what we believe that some portions of one chromosome keep on unaltered transmission. So इस हुआ ये कि ये वो एरिया था जहाँ पर बॉक्स नजर आ रहा है, एंड दिस एरिया इज, आई मीन लेट्स सपोज इज इम्पोर्टेंट फॉर हेट्रो, इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉसिंग ओवर. ये एरिया था जो क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी था. वैसे तो किसी भी जगह पर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है. दिस इज बिकॉज इफ both the chromosome are 100% the same, the crossing over could take place everywhere. But if due to some reason one of that area lose its ability to perform क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि इस केस में हमें नजर आ रहा था, एक क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर एक जगह के ऊपर मिसिंग होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन. और इट कुड बी पॉसिबल ये म्यूटेशन नहीं थी, रादर इट वाज एवोल्यूशनरी एडवांटेज इन फ्यू ऑर्गेनिज्म. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज आ गया कि जिसकी वजह से ये एरिया क्रॉसिंग ओवर से एग्जाम्प्ट हो गया. सो व्हाट हैपेंड, this area in fact do not cross over anymore. What is the end result? This area keep on transmitting to the next generation unaltered. आपको पता है ना क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है. क्रॉसिंग ओवर brings variability. So one chromosome is crossing over to the other chromosome. That means one of the portions of this chromosome, this genetic material, are in fact crossed over to the other genetic material. But if you do not allow this thing to happen, so they will always move on unaltered. So in few organisms, this area which were under the force of some kind of mutation or some evolutionary pressure, this keep on transmitting unaltered. So आप इसको यूं समझिए कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में यह अनअल्टर्ड हुआ, दूसरी से ये तीसरी ऑर्गेनिज्म में अनअल्टर्ड हुआ. After some time, it could be possible, after some time this the neighboring area of this region, जिसको हम इस वक्त येलो रीजन कह रहे हैं, जिसके अंदर ये नजर है, this neighboring area is also got some kind of mutations, further mutations, which let it transmit which allow it to transmit unaltered. So that means कि जो क्रॉसिंग ओवर पहले यहाँ पर पॉसिबल थी, अब वो भी क्रॉस ओवर नहीं हो पाई. इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम तो अपनी अपनी नॉर्मल कंडीशन में बरकरार रहा, दूसरा क्रोमोसोम अपनी म्यूटेशन की वजह से अनअल्टर्ड रहा, और अनफॉर्चुनेटली यार फॉर्चुनेटली ये क्रोमोसोम जिन ऑर्गेनिजम्स में गया उनके अंदर
करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होना शुरू हो गए, जिसको हम कह लें कि फॉर एग्जांपल जेंडर स्पेसिफिक फीचर्स अपीयर होना शुरू हो गए. दिस इज इन फैक्ट द Y क्रोमोसोम. व्हाट हैपेंड इन द लेटर ऑन हिस्ट्री, बाकी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या हुआ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम वर इन फैक्ट लूज, वो खत्म हो गए. ओनली दिस पोर्शन जो कि हेट्रोक्रोमेटिक कह लें या जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं थी, वो बच गया. एंड नाउ वी नो दिस ऑर्गेनिज्म, दिस पोर्शन as a Y chromosome. So you see, this all starts with the same chromosome, but it keeps on moving into the other end, and by the end, this was the sexually dimorphic organism. Luckily or unluckily, all those organisms which were keep on carrying this mutation, they were the male, and the other organisms which were not in fact carrying this पर्टिकुलर क्रोमोसोम, जिसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर की एबिलिटी लूज हो चुकी थी, वो फीमेल्स बन गई, जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्रोसेस. दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ interpretation how this might have happened, and of course इसकी कुछ हमारे पास examples भी हैं. So now this all begins with a homogamete, but it all ends with an heterogamete. So all the males are heterogametic and all the females are homogametic, at least for this case of X chromosome. हम अगर genetic level पे जाएंगे, genes के level पे, तो वो थोड़ा सा different हो सकता है एक दूसरे से. Okay, having said that, still there are some regions of the Y chromosome which are exactly the same as the X chromosome. These regions are called, we name these regions pseudo-autosomal region. What are they called? Pseudo-autosomal region. If you could name them, पार आगे एक slide के अंदर फिर ये आएगा word. I can somehow highlight you for the sake. वो रीजन जो कि सिमिलर है Y क्रोमोसोम के X क्रोमोसोम के साथ, these are called पार और सीडो ऑटोसोमल रीजन्स. यानी ये वो रीजन है जो कि कंप्लीटली ऑटोसोम नहीं बना रहे, यानी ये ऑटोसोम्स की तरह बिहेव करेंगे. दीज टू रीजन्स आर बिहेविंग लाइक ऑटोसोम्स. ऑफ कोर्स दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, but these regions will behave like an autosome. That is what is called pseudo-autosomal region. For example, this portion of the XY chromosome and this portion of the X chromosome are also pseudo-autosomal region. We are not into at that time. ठीक है. तो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इस तरह स्टार्ट हुई, वन क्रोमोसोम के अंदर ये हो गया. एंड व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड, it all normally multiple factors could be possible. As I already told you, we do not know the evolutionary pressure which might have led to this sexual dimorphism, but of course it has an advantage in terms of variability, in terms of, for example, in terms of you could say that the two different sexes and both of them could carry different type of characteristics. But one more thing which is very important to understand is that during the embryogenesis के अंदर a cell has a limited resources, and with these limited resources he has to bring maybe a complete organism. This is a very crucial point. आपके पास सिर्फ थोड़ी अमाउंट रकम है और आपने उसके साथ घर का खर्चा भी चलाना है, बाकी चीज़ें भी चलानी है, अपने बच्चों की फीस भी देनी है, गाड़ियां भी आपके करनी है, ऑफ कोर्स अगर किसी वजह से कोई घर में बीमार हो गया तो आपको उसको भी मैनेज करना है. सो ड्यूरिंग दिस एम्ब्रियोनिक देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज बट देयर आर लॉट ऑफ वर्क टू डू. व्हाट डू नॉर्मली सेल्स डू? सेल्स उस वक्त, जैसे मैंने कल भी बताया, कोशिश ये करते हैं कुछ सेल्स को साइलेंट कर दें, तो कुछ जीन्स को साइलेंट कर दें एटलीस्ट, ताकि उनके ऊपर जो अखराजात होने हैं वो खत्म. आप दूसरे लफ्जों में कहें, आप अपनी ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ. सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इट कुड आल्सो बी अनदर रीजन जिसकी वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल है. ओनली क्रूशियल जीन्स आर आस्क्ड to express themselves. So those crucial genes normally are not present on the Y chromosome, they are present on the X chromosome. So what happened? So only one or two genes on, for example, any specific chromosome could let it to go down. In this case, in male's case, the SRY gene, which is in fact the male fertility gene, it is located on the Y chromosome. It pop up and it is being silent, और इसको साइलेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा Y क्रोमोसोम साइलेंट रहता है ड्यूरिंग द होल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो यही वजह है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अमूमन लेटर इन डेवलपमेंटल फेज अपीयर होती हैं, क्योंकि उस जब तक कोई जीन पॉप अप नहीं करेगा, कोई जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, उस वक्त तक कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर नहीं होंगी. सो दैट इज व्हाई SRY जीन
as a result of SY gene, it also act as a marker gene during embryonic development, जिसकी वजह से सेल को पता लग जाता है कि ये क्रोमोसोम है जिसका कोई रोल नहीं है इस सारे केस में, इसको खामोशी, इसको शट अप कर दे, इसको तू तो चुप कर जा। इसका घर में अमूमन होता है ना, किसी को अनरिलेटेड बंदे को कहते हो तू खामोश हो जा, तेरी जरूरत नहीं। तो इट इज सिमिलर थिंग, SRY gene is kept silent during the embryonic development. This is one of the advantages की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है। Here is the picture जहाँ पर आपको X और Y क्रोमोसोम का एक कंपैरिजन शो किया जा रहा है। I mean you could see this is the Y chromosome, this is the X chromosome. Only few genes are available on the Y chromosome, and these genes are shown here. For example, SFY, P, RP, S4Y, AMGY. I don't know what these genes are for currently, but what I'm interested is that this region, which is important for, which is pseudo-autosomal region to this Y chromosome. I mean, you could see that these all genes are also present on the X chromosome. So this is the X chromosome and this is the Y chromosome. So this is the X chromosome जिसके अंदर ये मौजूद है genes, and this is the similar things जो कि यहाँ पर मौजूद है. So this is called PAR1, which is in fact stand for pseudo autosomal region 1. I mean I have already spoken that out. Similarly, there is another PAR region which is present on the tip of the Y chromosome and the tip of the X chromosome, जहाँ पर एक और PAR मौजूद है जिसको PAR2. It's a small region which is also shown. Moreover, in this picture के अंदर you could also see that the major portion of the small arm of Y chromosome and the small arm of X chromosome are the pseudo-autosomal region, whereas the long arm do not have that much similarity. Of course, there are some non-coding DNA regions which are also present on both X and Y chromosome. For example, you could say for this this lined region and this region which is somehow marked with these inclined lines, ये non-coding DNA. On the other hand, rest of the whole of the X chromosome is in fact made up of lots of genes, multiple genes, and some genes are carrying multiple copies as well. These black regions जो आपको नजर आ रहे हैं, ये basically आपको G bands की position show कर रहे हैं. I hope you all now understand what is the G band. Everything which we are discussing in this course is somehow interconnected with each other, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया. So this is whole of the structure. So this is the P arm, this is the Q arm. Only the some portion of the P arm is pseudo-autosomal region with the Y chromosome, whereas rest of the others are not. So you could see these are the genes जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं और वो genes यहाँ पर भी मौजूद हैं. Okay. Now, what is the problem? The problem is if one of the X chromosome, okay, if one of the X chromosome, if the male has just one X chromosome and the female has two X chromosome, the problem is very obvious. So all those genes which are present in these regions, they will be duplicated in females because males have only one X chromosome, so they will keep on expressing this portion, whereas the female have two X chromosome. It's not problem with these ऑटोसोमल रीजन, ये सीडो ऑटोसोमल रीजन के ऊपर जीन्स का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों के अंदर मौजूद है, तो इट विल गो फॉर द नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी. लेकिन फीमेल्स के अंदर ये जो दूसरे रीजन्स हैं, दे कुड मेक अ प्रॉब्लम. So this calls for another phenomena which is called a dosage compensation. So if twofold difference in copy number, of course this will now call a copy number because male have one copy of X chromosome, female have two copies of X chromosome. जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ सर, मैं पूछ रहा था इस ये सूडो जीन में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई सर. पार्ट 1 का आपने बता दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 सूडो जीन के बारे में बता रहा हूँ सर. जी जी, ये दो जगह पे मेंशन है ना, आपने फीमेल का भी बता दिया और मेल सेक्स क्रोमोसोम का भी बता दिया कि इसमें ये मौजूद है. अब ये मेल के वाई क्रोमोसोम पे है या एक्स? नहीं, it's these pseudo-autosomal regions are present on both. For example, it is also present on X chromosome and it is also present on Y chromosome, whereas rest of the portions of the X chromosome, they are not present on the Y chromosome. I mean, because Y chromosome is small chromosome, मैंने कहा ना Y chromosome is a subset of X chromosome. So X chromosome की अगर सिर्फ tips को ले ले
और इसके सेंटर में चांद एक जीन्स को ले लें तो ये वाई क्रोमोसोम बन जाता है. दिस इज द ओनली थिंग. वेयर एज द एक्स क्रोमोसोम इज मच बिगर क्रोमोसोम जिसके अंदर अदर जीन्स भी अवेलेबल है. सो इफ यू टॉक अबाउट female, there is twofold difference in copy number. So male have one X chromosome, female have two X chromosomes. It's a twofold copy number difference. And if it is not corrected, this will create twofold difference in some certain type of genes, and which could make problem for thousands of genes. Of course, X chromosome के ऊपर thousands of genes होंगे. जिनका if अगर thousands of genes नहीं भी हैं, only dozens of genes. Let's suppose हम कह लें कि dozens of genes हैं इसके ऊपर, still these dozens of genes could affect other genes जिनका जो किसी पाथवे के अंदर इनके साथ कनेक्टेड है. तो इस वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो evolutionary there are three different mechanisms through which these dosage effects are compensated. It's not only the X chromosome. I mean, these three are shown here. The first one is the switching off gene on वन ऑफ द टू फीमेल एक्स क्रोमोसोम. एक तो तरीकाकार ये है कि आप एक एक्स क्रोमोसोम को साइलेंट कर दीजिए, दूसरे एक्स क्रोमोसोम को चलते रहना दीजिए. दूसरा तरीका ये है कि आप वाई क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन को डबल कर दीजिए ताकि वो जीन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो डबल हो जाए, वो अपना काम डबल करना शुरू कर दें और एक्स क्रोमोसोम को फिर ये मुकाबला कर सके. एक्स के ऊपर तो डबल ही हो रहा है ना ऑलरेडी, तो वाई को भी डबल के ऊपर बराबर ले आएंगे. थर्ड कुड बी पॉसिबल दैट you half the expression pattern of X chromosome. So X chromosome के ऊपर क्योंकि डबल दो क्रोमोसोम है तो हम कहेंगे यार दोनों के ऊपर अगर पॉसिबिलिटी ही है करने की तो हम दोनों का एक्सप्रेशन आधा आधा कर दें. तो आधा आधा करेंगे तो फिर भी Y के बराबर हो जाएगा. तो वी ऑल हैव एग्जांपल ऑफ ऑल दिस फिनोमेना. फॉर एग्जांपल मेमल्स हैव वन एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करते हैं. मेल जो ड्रोसोफिल है उसके अंदर मेल्स का एक्सप्रेशन डबल कर दिया जाता है. Similarly, some of the worms and C elegans के अंदर X chromosomes, दोनों X chromosome का expression आधा कर दिया जाता है. But one or the other factors have some problem. For example, if you are lowering the expression with half, you equally require those machinery जो कि दोनों chromosomes के ऊपर workout कर रही है. So it doesn't make any sense. Similarly, अगर आप male का expression double कर रहे हैं तो still it doesn't beneficial for the cell because cell को तो उतना ही काम करना पड़ रहा है. वो X क्रोमोसोम्स को दो को तो एक्सप्रेस करवा ही रहा था, उसको मेल के अंदर Y क्रोमोसोम को भी एक्सप्रेस करवाना पड़ रहा है. So that's not physiologically possible. So one of the other viable solution is the inactivation of X chromosome. We are discussing in fact that X chromosome. This picture is simply to tell if अगर आप जीन एक्टिविटी की बात करेंगे तो मेल्स के अंदर अगर जीन एक्टिविटी आधी है तो फीमेल्स के अंदर वो पूरी हो जाएगी. तो दिस इज जस्ट द रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जीन दोनों के अंदर डिफरेंट होंगे. सो फॉर एग्जांपल ब्लू कर्व इज फॉर द एक्स क्रोमोसोम एंड येलो क्या कहते हैं ना रेड कर्व इज द फॉर द ऑटोसोमल जीन्स. दोनों के अंदर एक्सप्रेशन को बताया कि अगर दोनों की मीडियन लें तो एक्स और वाई से ये निकलती है. लेकिन अगर जीन एक्टिविटी फीमेल्स की बात करें तो वो फुल टू फोल्ड अप हो जाएगी. तो ये जो आपको दो बैरियर नजर आ रहे हैं, दो डिफरेंट कर्व्स नजर आ रहे हैं, दे विल मर्ज टुगेदर. दैट मीन फीमेल्स के अंदर इन दोनों का आधा आधा एक्सप्रेशन मिलकर डबल एक्सप्रेशन बना देगा जो कि मेल्स को फेवर नहीं करता. इस वजह से यू हैव टू सी दिस इज अ क्विक पिक्चर इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के कैसे बेसिकली इसको मेंटेन किया जा सकता है. So at one cell stage, two cell stage, I have already gone through. So this is the single cell stage. At this stage, these are the XP and XM. दोनों maternal और paternal XP है. At the early embryonic stage, imprinting के जरिए paternal X chromosome को silent कर दिया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया. इसका मतलब है कि maternal X chromosome is always keep on expressing themselves, whereas later on at the developmental stage जिसको at the primordial stage जिसको blastocyst stage भी कहते हैं, either paternal or maternal X chromosome is selected for inactivation जिसको हम मार्क करके कहते हैं कि ये X या P है. क्विकली हम आगे इसको थोड़ा सा फर्दर भी डिस्कवर करेंगे. which chromosome is going to be silent? It depends on the presence of XIC which is called X-inactivation center. X-inactivation center. Of course, normally both of the X chromosomes contain this X-inactivation center, but
and this is inactivation center play a very vital role, जिसकी वजह से ये सारे का सारा एक्स इनएक्टिवेशन का फिनोमेना। और हम आगे की तरह आगे इसको पढ़ेंगे। अर्ली में इस पिक्चर के अंदर हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं, आई मीन दिस इज अगेन, ये आपने वो देखा भी उस वीडियो के अंदर भी देखा कि कैसे ये सारे का सारा फिनोमेना हो रहा है एक्स इनएक्टिवेशन का। अर्ली इन दी डेवलपमेंटल एम्ब्रियो पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड, लेटर ऑन जो है मैटरनल या पैटर्नल दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर दिया जाता है और वो बेसिकली लेटर ऑन गिविंग राइज टू दैट एक्सप्रेशन जिसके हम जिक्र कर रहे हैं। और ये अगर आप बात करेंगे बिल्लियों के अंदर तो कैलिको कैट पैटर्न की भी एक रीजन यही एक्स इनएक्टिवेशन थी। As I have already mentioned, studies of abnormal X chromosome in humans and mice have shown that an X chromosome can be inactivated only if it contains a specific region, a defined region, and this region is called X inactivation region, X inactivation center. This region is called X inactivation center. If this is in X inactivation center is present, this will be silent. If not, this not be silent. ऐसा नहीं है कि किसी X क्रोमोसोम के ऊपर XIC होता है, किसी के ऊपर नहीं, दोनों X क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। यहाँ पर सिर्फ बताना मकसद ये है कि अगर आप XIC को डिलीट कर दें किसी क्रोमोसोम के ऊपर से तो वो फिर X इनएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से तो क्विकली मैं आपको जल्दी जल्दी इन स्लाइड से गुजारूंगा। प्रोसेस क्या है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने भी ये अगली चंद एक स्लाइड्स कहीं से ली हैं। यहाँ पर आपको नजर आ गया दोनों के अंदर एक्साइटी मौजूद है। दिस एक्साइसी जो है वो एक आरएनए प्रोड्यूस करता है जिसको जिस्ट आरएनए कहता है। ये जिस्ट आरएनए दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रोड्यूस होता है। इसके एंटीसेंस आरएनए को T6 कहते हैं और सेंस आरएनए को जिस्ट कहते हैं, ठीक है। जिस्ट आरएनए बाइंड करता है अपने एंटीसेंस के साथ, ठीक है, और ये एक्सआईसी सेंटर के ऊपर जाके बाइंड करता है। 37 किलो बेसिस का बेसिकली ये रीजन है और इसके साथ ये जिस्ट आरएनए बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो यहाँ पर मैसिव क्रोमेटिन चेंजेस हो सकती हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रोमेटिन चेंजेस या आरएनएआई दिस जिस्ट आरएनए इसको मार्क कर देता है कि अब इसको क्या होना है, इसको साइलेंट होना है। So increased expression of Xist RNA from the X to be inactivated, जिस X को inactivate करना होता है उस X से Xist RNA प्रोड्यूस होता है। इस X से Xist RNA प्रोड्यूस होगा। जब इस X से Xist RNA प्रोड्यूस होगा तो ये मार्क हो जाएगा कि ये X अब साइलेंट होगा, जबकि दूसरा X जो है जिससे T6 प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से ये सारे का सारा फिनोमेना आगे की तरफ जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को समझ आ गई, इसका मतलब 2 X में से एक X क्रोमोसोम से जिस्ट आरएनए प्रोड्यूस होगा और वो दूसरे को जाके साइलेंट कर देगा। जहां पर जिस्ट आरएनए प्रोड्यूस होता है वहां पर PRC2 कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। नीडलेस टू से वी हैव अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ पॉलीकॉम ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स और वहां पर हमने PRC1 और PRC2 कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र पढ़ा था। तो यहाँ से आपको मालूम होगा कि बेसिकली पॉलीकॉम रिप्रेसिव कॉम्प्लेक्स उस X क्रोमोसोम्स के ऊपर आके बाइंड करता है, ठीक है। बोथ एक्सेस आर एक्टिव, इस कंडीशन के अंदर बोथ X क्रोमोसोम्स एक्टिव है। सेकंड पिक के अंदर आपको लगता है जिस्ट आरएनए जो है वो बाइंड कर चुका है एक X क्रोमोसोम के साथ, जिस X क्रोमोसोम के साथ वो जिस्ट आरएनए बाइंड किया है उसने फर्दर डिफरेंट दूसरे X क्रोमोसोम्स को भी दूसरे जिस्ट आरएनए को भी अपनी जगह पर इनवाइट किया। तो बहुत से दूसरे जिस्ट आरएनए भी वहां पर आके बाइंड कर गए हैं और ये पूरे का पूरा प्रोसेस आगे जाके बढ़ता है कि जब इसके साथ PRC2 कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ PRC2 कॉम्प्लेक्स दिस होल क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी साइलेंट, व्हेयरएज द अदर क्रोमोसोम अपना काम करता रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अगेन दिस इज प्रीजिस्ट, जब X इनएक्टिवेशन सेंटर के ऊपर जिस्ट आरएनए बाइंड नहीं किया और जब ये बाइंड कर गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। इफ यू कुड सी दिस इज जिस्ट आरएनए, वन X chromosome is producing जिस्ट RNA and the other one is producing the T6 RNA. So अगर जिस्ट RNA प्रोड्यूस होगा और वो जाके दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर कर गया, क्योंकि अगर यहाँ से जिस्ट RNA प्रोड्यूस हुआ और इसके साथ जाके बाइंड कर गया तो इसका मतलब है इसने इस एंटीसेंस RNA को स्टॉप कर दिया।
और इस एंटीसेंस आरएनए को स्टॉप करने की वजह से ये पूरे का पूरा जो है इनएक्टिवेशन हो रही है। सो द मेजर रोल जो कि यहाँ पर बताना मकसूद, आई एम नॉट गोइंग इनटू बिग डिटेल, वो ये है कि दिस इज द ऑल हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन। और अगर आप यहाँ पर डिफरेंट मार्क्स का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट क्रोमेटिन मार्क्स, फॉर एग्जांपल H3K27 जो है वो एसोसिएट वो हाई लेवल्स में पाई जाती है हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन के अंदर, विच इज इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पॉजिटिव साइन जो कि हमने अभी तक पढ़ा उसके साथ ये मैच कर रहे हैं। ये फिगर भी आपको उसी से रिलेटेड है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव फुल डिटेल क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम भी कम है और दूसरा आप लोग समझते हैं कि मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बेसिक आइडिया देना था कि एक्स इनएक्टिवेशन कैसे होता है। आई होप कि कभी फर्दर आप लोगों से किसी और क्लास में मुलाकात होगी तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। किसी ने इस मामले के ऊपर कुछ पूछना है बताना है तो मुझसे बता सकता है, फिर हम कुछ चंद एक बातें करेंगे और फिर हम अल्लाह अल्लाह बाय बाय हाफिज कर देंगे। ठीक है जी। एक्स इनएक्टिवेशन के ऊपर आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जिस्ट आरएनए का ज़रा दोबारा बता दें, इसका क्या मेन रोल है क्रोमोसोम के अंदर? Xist RNA is to mark the gene for an X inactivation। ठीक है, Xist RNA की वजह से वो X क्रोमोसोम मार्क हो जाएगा जिसको हमने साइलेंट करना है। इफ यू सी दिस पिक्चर, इधर गया वो शुरू वाली पिक्चर, इस वक्त मेरा कंप्यूटर जो है ना वो हैंग होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो Xist RNA जब प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होके एक्स क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर जाता है। जिस एक्स क्रोमोसोम के साथ Xist RNA बाइंड करेगा वो क्रोमोसोम साइलेंट होने के लिए मार्क हो जाएगा। अमूमन 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम Xist RNA प्रोड्यूस करता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम T6 RNA प्रोड्यूस करता है। Xist RNA इस क्रोमोसोम से अगर निकला है तो वो जाके इस क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर जाएगा और इस क्रोमोसोम के साथ बाइंड करने की वजह से इसके ऊपर एंटी सेंसिंग कर देगा, जिसकी वजह से PRC2 कॉम्प्लेक्स और बाकी चीजें इसके साथ बाइंड करना शुरू कर देगी। देखिए मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलना शुरू होगा, इतनी स्लाइड्स हैं और चला भी नहीं रहा और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है मुझे। देखा, इसलिए मैंने रोक दिया अपने आप को, क्योंकि अगर मैं ये सारा कुछ करना शुरू हो गया इसके लिए 2-3 लेक्चर्स चाहिए होंगे, इसलिए मैंने सोचा आई वुड स्टॉप इट हेयर और आप लोगों से पूछना चाहिए। सो मेजर चीज जो आप लोगों को बताने की थी, वी आर नॉट डिस्कस द होल मैकेनिज्म, जस्ट वन पोर्शन ऑफ द मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म इसके लिए था कि जिस RNA की वजह से क्रोमेटिन चेंजेस होती हैं, देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस जो कि क्रोमेटिन के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम की शक्ल इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, so today's lecture we saw multiple things. One was to see how this sex has determined origination of two sexes has originated, कैसे दो सेक्सेस की ओरिजिनेट हुई हैं। और सेकंड थिंग जो हमने देखा